Hello and welcome back to this channel. Dear students, this topic is handoff strategies or handover strategies. It is the topic from the subject cellular network. Earlier, I have created three videos related to this particular unit. So do watch that videos because everything is interlinked. Now, first of all, what's the meaning of handoff or handover? The process of transferring mobile station from one base station to another is called handoff or handover process. अब देखो, earlier we have learned we are using a cell structure. The shape of cell is hexagonal. We discussed the reason why the shape should be hexagonal and so on. There is one term which is a mobile station, मतलब जो मोबाइल हम लोग यूज करते हैं, that is the mobile station. जैसे एक पर्टिकुलर सेल है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस वन पर्टिकुलर सेल, सपोज दिस इज सेल नंबर 1 is designed to cover a particular area opacity. Usually roughly say it covers 10 kilometer square area of a particular city. If your call is in progress, मतलब आप मोबाइल पे बात कर रहे हो and this is the base station. I am assuming that base station is centered at the center of this hexagonal cell. आप मोबाइल पे बात कर रहे हो एंड इफ यू आर मूविंग, दिस इज योर मोबाइल, इफ यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द बेस स्टेशन, सो रिसीव्ड पावर गोज ऑन रिड्यूसिंग एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस. जैसे ये बॉर्डर है सेल 1 का, यहां से दूसरा सेल स्टार्ट होता है. लेट अस से दिस इज अनदर सेल. सेल 1 इज डिजाइंड टू ऑपरेट फॉर अ फ्रीक्वेंसी f1, मतलब इसका चैनल है f1. सपोज दिस इज सेल 2, इसका बेस सेंटर यहाँ पे, दिस इज सेल 2 विच इज डिजाइन टू ऑपरेट एट द चैनल और एट द फ्रीक्वेंसी f2. जैसे मैंने बताया, आप मोबाइल कॉल प्रोग्रेस में, मतलब आप बात कर रहे हो फोन पे एंड इफ यू आर मूविंग अवे, देन एज द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस स्टेशन 1 इंक्रीजेस, द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल गोज ऑन बिकमिंग वीक. अब यहाँ पे बॉर्डर है, once you cross this border without this hands off process, there may be called drops. तो ये अवॉइड करने के लिए हैंड्स ऑफ प्रोसेस और हैंड ओवर प्रोसेस यूज करते हैं. अब देखो, विदाउट द नॉलेज ऑफ यूजर, जैसे इफ यू विल एंटर इनटू द एरिया ऑफ सेल 2, the all the controls will be transferred to the base station 2 and indirectly to the channel f2. This process is taking place without the knowledge of user and it is called handoff or handover process. इसके अलग अलग strategies है. So this is the basic concept of handoff or handover process. अब देखो, जैसे मैंने बताया कि if you are moving away from the base station, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे the strength of signal goes on reducing. तो एक मिनिमम लेवल डिसाइड करते हैं as shown in this diagram. This is the minimum signal level. मतलब हर एक सेल में, हर एक एरिया में एक मिनिमम लेवल डिसाइड करते हैं. If the received signal is below that particular minimum level, there will be called drop. So this is the minimum signal level. फिर हैंड ऑफ होना चाहिए, मतलब ये कंट्रोल दूसरे बेस स्टेशन को ट्रांसफर करना चाहिए. दिस कंट्रोलिंग सिग्नल इज सेंड बाय एमएससी. अब ये ट्रांसफर करने के लिए एक थ्रेशोल्ड लेवल डिजाइन करेंगे. दिस थ्रेशोल्ड लेवल शुड बी अबव दिस मिनिमम सिग्नल लेवल. मतलब जैसे मैंने बताया, मिनिमम सिग्नल लेवल क्या है, उसके नीचे सिग्नल लेवल गया तो देयर विल बी कॉल्ड ड्रॉप. उसके थोड़ा ऊपर एक थ्रेशोल्ड लेवल हम लोग एज्यूम करेंगे. दिस इज कॉल्ड हैंड ऑफ थ्रेशोल्ड. If the signal touches to the handoff threshold, so some signal, control signal should be generated and the controls should be transferred to the base station 2. अब जैसे देखो, मैंने दो डायग्राम बनाए. In figure 1, this is say figure 1, this is figure 2. Figure 1 में जैसे देखो, ये एक पॉइंट है, this is एक पर्टिकुलर लेवल मैंने एज्यूम किया है, सिग्नल लेवल. दिस इज सिग्नल लेवल एट पॉइंट ए. ये पॉइंट ए मैंने यहां पे दिखाया है. दिस इज रिलेटेड टू बेस स्टेशन. एक सेल है, सपोज सेल ए, दिस इज सेल बी. ए पॉइंट है, इट इज इन सेल ए. यहां पे जो सिग्नल लेवल आ रहा है, इट इज शोन बाय दिस लेवल. अब जैसे जैसे यूजर विल ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम द बेस स्टेशन, सिग्नल स्ट्रेंथ विल गो ऑन रिड्यूसिंग. अब जैसे देखो, एक्चुअली यहां पे हैंड ऑफ प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए. हैंड ऑफ प्रोसेस मतलब कंट्रोल दूसरे बेस स्टेशन को ट्रांसफर होना चाहिए, बट इट टेक्स सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड. सो सपोज यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ तो सिग्नल विल गो बिलो दिस मिनिमम लेवल. और जैसे मैंने बताया, इफ सिग्नल गोज बिलो दिस मिनिमम लेवल, देयर विल बी कॉल्ड ड्रॉप. सो इट विल रीच एट लेवल बी एंड देयर विल बी कॉल्ड ड्रॉप. तो
तो ये जो है दिस इज इम्प्रॉपर हैंड ऑफ मैकेनिज्म, क्योंकि बिफोर taking place of handoff the signal drastically goes below the minimum level and there is called drop. अब दूसरा सिचुएशन देखो, दिस इज फिगर 2. यहाँ पे मैंने दो ही लेवल्स ड्रॉ किए, एक हैंड ऑफ थ्रेशोल्ड लेवल विच इज द लेवल्स आर सेम एज दैट ऑफ प्रीवियस वन. यहाँ पे हैंड ऑफ थ्रेशोल्ड लेवल मैंने ये डॉटेड लाइन से बनाए हैं. अब जैसे देखो कॉल इज इन प्रोग्रेस, जैसे यूजर विल मूव अवे फ्रॉम द बेस स्टेशन, सिग्नल स्ट्रेंथ गोज ऑन रिड्यूसिंग व्हेनेवर दिस टचेस टू द हैंड ऑफ थ्रेशोल्ड. एंड डू रिमेंबर हैंड ऑफ थ्रेशोल्ड इज वेल अबाउ द मिनिमम सिग्नल लेवल. यहाँ कहीं मिनिमम सिग्नल लेवल होगा. तो यहाँ पे एज शोन इन दिस सेकंड डायग्राम, यहाँ पे हैंड ऑफ प्रोसेस स्टार्ट्स as soon as the signal strength, signal level touches to this hand off threshold. यहाँ पे स्टार्ट होगा तो रिसीव्ड सिग्नल का ग्राफ ऐसा मिलेगा. सो इट विल रीच टू लेवल बी, मतलब यूजर विल नॉट कम टू नो बट द कॉल विच वॉज इन प्रोग्रेस विल बी कंटिन्यू एज इट इज. अब ये दो सेल्स मैंने बनाए हैं, सेल ए एंड सेल बी. सो दिस पर्टिकुलर फिगर शोज द प्रॉपर हैंड ऑफ मैकेनिज्म. ओके, अब जैसे देखो मैंने बताया कि ये मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल कंसीडर करते हैं. दिस इज हैंड ऑफ थ्रेशोल्ड दैट शुड बी अबव द मिनिमल सिग्नल लेवल. मिनिमम सिग्नल लेवल क्या है, उसके नीचे सिग्नल स्ट्रेंथ गया तो देयर विल बी कॉल्ड ड्रॉप. ये जो डिफरेंस है दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा. सो डेल्टा इज पीआर. पीआर में मतलब रिसीव्ड पावर, रिसीव्ड पावर हैंड ऑफ प्रोसेस का माइनस पीआर मिनिमम यूजेबल लेवल. मतलब इन सिंपल लैंग्वेज ये दो लेवल्स के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज डेल्टा. अब देखो वैल्यू ऑफ डेल्टा इज क्रिटिकल. If I will choose the value of delta to be very large, मतलब ये जो threshold level है that will be well above the minimum level, so there will be unnecessary hand off mechanism. This should not happen. If the value of delta is small, अब ये बहुत कम डिफरेंस है, मतलब ये सपोज ये लेवल हैंड ऑफ जो थ्रेशोल्ड लेवल है मैं यहाँ पे नजदीक ड्रॉ करता हूँ. देयर इज अ वेरी मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिफरेंस बिटवीन थ्रेशोल्ड एंड मिनिमम सिग्नल लेवल. तो इस केस में एज आई सेड सम टाइम पीरियड इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस द हैंड ऑफ मैकेनिज्म, क्योंकि सिग्नल जनरेट करके फिर एमएससी ने सिग्नल देना चाहिए. इसके बाद कंट्रोल विल बी ट्रांसफर टू द बेस लेवल 2. सो सर्टेन टाइम पीरियड इज रिक्वायर्ड. इफ दिस डिफरेंस बिटवीन दिस टू लेवल थ्रेशोल्ड एंड मिनिमम लेवल इज वेरी स्मॉल, तो उतना सफिशिएंट टाइम नहीं मिलेगा टू इनिशिएट द हैंड ऑफ प्रोसेस एंड हैंड ऑफ प्रोसेस विल नॉट बी इनिशिएटेड. देयर विल बी कॉल्ड ड्रॉप. सो द वैल्यू ऑफ डेल्टा शुड बी चूजन अकॉर्डिंगली. अब there is one more concept, it's called as dwell time. जैसे मैंने अभी बताया कि जो हम लोग कॉल प्रोग्रेस में और we want to transfer the control from base station 1 to 2, इसके लिए कुछ टाइम पीरियड लगता है. that time period is referred as the dwell time. Now we will discuss different types of handoff strategies or different techniques of handoff. First technique is mobile assisted handoff, that is MAHO. अब देखो फर्स्ट जनरेशन के मोबाइल में दिस हैंड ऑफ प्रोसेस वाज कंट्रोल्ड बाय MSE, मोबाइल स्विचिंग, MSC मोबाइल स्विचिंग सेंटर. सेकंड जनरेशन में इसमें चेंजेस किए गए. अब देखो अब क्या होता है नाउअडेज whenever especially in the urban areas when you are using a cell phone, जिसको बोलते हैं मोबाइल स्टेशन. Mobile station continuously monitors the power level which is getting from the present cell as well as neighboring cell. For example, जैसे ये एक सेल है, suppose cell number 1, this is adjacent cell, cell number 2. वैसे likewise there will be many adjacent cells 3, 4, 5. I am not drawing entire diagram. If the mobile station मतलब mobile user let us say, if it tries to move away from this center, signal strength will go on reducing. That this concept we have discussed. अब देखो this mobile station, that means a mobile handset, continuously measures the power received from base station A, base station 1, in which this mobile station is presently existing, as well as it is getting the signal strength. I mean it is measuring the signal strength from the neighboring cells. मतलब इसके नियर बाय जितने सेल्स है उसका भी पावर है मेजर करता रहता है. से दिस इज वन मोर सेल, सेल नंबर 3 एंड सो ऑन. जैसे सपोज सेल नंबर 2 का पावर इससे ज्यादा हो गया, देन हैंड ऑफ प्रोसेस स्टार्ट्स, मतलब ऑटोमेटिकली द सिग्नल इज सेंट एंड नाउ द कंट्रोल इज ट्रांसफर
to cell number 2. This usually takes place in case of urban areas where we use micro cell systems, मतलब बहुत छोटे छोटे areas के लिए एक एक cell use करते हैं. The next type of handoff process is inter-system handoff. अब मैंने ये explain किया first type that is MAHO. In this case, what we discussed, there is a common MSC, mobile switching center, that is controlling all the activities. That is sending the decision signals. Actually, controlling is taken by the mobile stations. All right. Think like this. एक पर्टिकुलर सिटी में हम लोग एंड इफ यू आर ट्रैवलिंग इफ यू आर मूविंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सो एट द बॉर्डर लेट अस एज्यूम दैट एमएससी इन अनदर सिटी इज डिफरेंट सो देयर शुड बी हैंड ऑफ प्रोसेस बिटवीन टू एमएससीज. इसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, ऑल द थ्री सेल्स व्हाटएवर आई हैव ड्रॉन इन द सिंप्लीफाइड डायग्राम it is connected to one common MSC. What I'm talking now, अगर MSC दूसरा है, दूसरे सिटी में सपोज हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, यू आर क्रॉसिंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, देन देर इज MSC 2. So at that time the controlling should be sent to MSC 2, that is mobile switching center 2. So this type of particular handoff process is known as inter-system handoff. The next type of handoff mechanism is prioritizing hands off. इसमें दो मेथड्स है. देखो, एज द नेम इंडिकेट्स, प्रायोरिटाइजिंग मींस प्रायोरिटी देना है हैंड ऑफ प्रोसेस को. इसमें दो टेक्निक्स है. फर्स्ट इज गार्ड चैनल कंसेप्ट. व्हाट इज दिस? जैसे देखो, आई एम एज्यूमिंग दैट देयर आर 100 चैनल्स रिजर्व्ड. 100 is just one example. 100 channels are reserved for one particular cells to provide voice and control signals. उसमें से कुछ चैनल से I will assign 10 number of channels for handoff process. मतलब out of available 100 channels, only 90 channels will be used for other subscribers, other users जिनको handoff नहीं चाहिए, and 10 will be always reserved for the users who needs the handoff mechanism. But the drawback of this system is that you are permanently allocating 10 channels in order to complete the handoff process. So the number of available channels for the regular users who don't need handoff request will be minimized, will be reduced. So there will be a problem of management of cellular traffic. Second type of technique is this particular technique is applicable only if you are using dynamic channel allocation. क्योंकि dynamic channel allocation हमने डिस्कस किया है, उसमें बाकी neighboring cells के भी channels हम लोग यूज कर सकते हैं. Then you can use this guard channel concept. Second is queuing of handoff request. बहुत सिंपल टेक्निक है. इसका मतलब एक क्यू बनाना है. अब देखो ये कैसे पॉसिबल है. दिस इज एज शोन इन दिस डायग्राम. ये कुछ हैंड ऑफ थ्रेशोल्ड लेवल है एंड दिस इज द मिनिमम. बिलो दिस आई हैव ड्रॉन मिनिमम सिग्नल लेवल. वी नो द कंसेप्ट. whenever the signal strength goes below this minimum signal level, then only call will be terminated. This is also called forced termination of a call. Forced termination of a call. अब देखो इसमें कुछ डिफरेंस है. उसी के बीच में हम लोग ये जो पर्टिकुलर सपोज दिस इज कॉल रिलेटेड टू पर्सन 1, ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है, मतलब यहाँ पे हैंड ऑफ प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन हमारे पास कुछ टाइम पीरियड है बिफोर दिस सिग्नल स्ट्रेंथ, बिफोर गोइंग बिलो दिस मिनिमम सिग्नल लेवल, if you can start hand off and you can maintain the conversation in the call. तो ऐसे मतलब ये इसको क्यू में प्लेस करेंगे. ऐसा दूसरा भी कोई यूजर है जिसको हैंड ऑफ चाहिए, उसको भी क्यू में प्रेस करेंगे एंड अकॉर्डिंगली वी विल मेंटेन द क्यू एंड वी विल डिसाइड द प्रायोरिटी एंड वी विल अप्लाई द हैंड ऑफ स्ट्रेटेजी. द नेक्स्ट टाइप इज इंटरसेल और इंट्रासेल हैंड ऑफ. अभी जो हमने डिस्कस किया दैट एंटायर डिस्कशन वाज रिलेटेड टू इंटरसेल हैंड ऑफ. मतलब क्या है? लेट अस टॉक अबाउट टू सेल्स ए एंड बी. If the mobile station मतलब the user which is handling that particular mobile handset, if mobile station is moving from cell A to cell B, then there will be transfer of control from base station A to base station B. Whatever we discussed earlier, this is applicable for intercell. मतलब एक सेल से दूसरे सेल में मोबाइल यूजर इज गोइंग टू एंटर. दैट इज रिलेटेड टू इंट्रासेल हैंड ऑफ प्रोसेस.
व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इंट्रा सेल? इंट्रा सेल मतलब जैसे एक सेल है, सी different channels are allocated to one particular cell. This is cell A. Not only a single channel is allocated. मतलब क्या है? A band of frequencies is allocated. Suppose ये cell के लिए we'll be using three frequencies F1, F2, F3. One cell user is there, one mobile station is there, say number 1, that is presently connected or making use of frequency F1, means it is making use of channel 1, let us say. उसका स्ट्रेंथ अगर कम हो गया तो देयर शुड बी स्विचिंग टू द अनदर चैनल हैविंग फ्रीक्वेंसी F2, बट दिस F2 एज वेल एज F3 दे आर इन द सेम सेल. ये जो टाइप का हैंड ऑफ प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड इंट्रा सेल हैंड ऑफ. नेक्स्ट टाइप ऑफ हैंड ऑफ प्रोसेस इज हार्ड हैंड ऑफ. It is basically applicable for GSM systems. In this case, the mobile is changing or entering into the another base station which is operating at different frequency. So channel allocation is different for the two base station, older base station and newer base station. There are large chances of call drops in case of hard handoff system, and in this case remember this word, it is basically break before make system. Means the connection, the previous connection with the previous base station is breaked before making the new connection, so the chances of call drop are more. The sixth type of handoff process is soft handoff. It is applicable for CDMA systems and the call drop chances are less. This is the case in which the two base stations are operating at the same frequency, that means at the same channel, and it is make before break arrangement. That means first the connection with the new base station is established, and after establishing the connection, then the previous connection with the previous base stations are break. You can say an efficient handoff process is a delayed handoff process. It is also called two-level handoff process. Two-level handoff process. As the name indicates, there are two handoff levels. I have for the explanation I have drawn one diagram. It is the graph of signal strength versus time. We know that during handoff the signal strength goes on reducing. So suppose the mobile station is at one base station, related to one base station, say B1, and handoff begins. That means if the mobile station is moving and it appears at the border and wants to enter into the cell 2, then in that case the signal strength goes on reducing as the mobile user is away from the base station B1. Now in this case the B1 makes an request to B2 for the channel allocation, but due to some reason, suppose the channel B2 is busy, it is not accepting the request. In that case the call is not dropped but some delay is provided. So but in case of delay there is continuous degradation of the signal, मतलब सिग्नल continuously reduce होता जाता है. So यहाँ पे suppose handoff request raise किया है और सिग्नल base station B2 is busy, so the request of handoff is keep on hold, मतलब delayed. उस केस में signal strength again goes on reducing, तो second level तक delay provided किया जाता है. But in the case if again signal during the second level also the call request is not accepted and the signal strength continuously reduces, if it touches or goes below the minimum signal level then only call is dropped. So this is called delayed or two-level handoff process. Now we will discuss some concepts related to handoff process. One concept is concept of cell dragging. Consider a pedestrian, मतलब the person who is walking. If the person is walking and moving away from the base station, then reduction in the signal strength is very less. I mean it is reduction is taking place with a very small speed. In that case there is a LOS कनेक्शन. LOS मीन्स लाइन ऑफ साइट कनेक्शन. मतलब क्या है, जो यूजर है मतलब मोबाइल स्टेशन जो है
between that user mobile station and the base station there is a direct link, means there is no indirect link, they are directly connected. So इस case में, in case of a person who is walking, the signal strength reduces very slowly. So such person, even if it moves far away from the base station, then also the handoff process is not taking place because there is a very small change. So threshold level is not reached. So this is the problem which is called as a cell dragging. It is usually happening in case of urban cities where micro cells are used. So this will create a problem as far as this traffic management is concerned. The most important concept is umbrella cell concept. In case of urban areas, it is difficult, practically difficult to get a new cell site, a physical new cell site. As well as another problem is that if the users are traveling in a car, they can speedily change the zone. That means they can speedily enter from one cell into the another cell. So handoff mechanism becomes difficult. To avoid all such problems, umbrella cell concept is used. It is considered that there is a large cell, and inside the large cell there are many smaller cells are used. Every cell consists of different sized antennas. Now, advantages of this concept is large coverage areas is provided to the high speed users. That the high speed users are the users which speedily make change from one cell to enters from one cell into the another cell. Then it minimizes number of hands off. Third, small micro cells are provided, additional small micro cells are provided for the pedestrian, that means the persons who are walking. So it is illustrated in this diagram. These small micro cells are for low speed traffic which is having antenna, let us say having less height compared to the other antennas, and this larger umbrella cell is used or is applied for the high speed traffic. So dear students, in this video I have covered the different handoff mechanism techniques and some important concepts related to handoff. So that's it for today's section. So thanks for watching this video.